Hello, good morning, friends. This is Vyant from ESOP IELTS Camps. Today we are going to start listening, and even there are some of the difficulties you most of the times have to face, and even you will have to face in your real test. So these kind of questions are over there, and your mind always got vanished, got empty. So to avoid those kind of problems, I wanna give you some suggestions and advice with regard to these type of questions. So the first thing you need to keep in your mind while before the listening, they will give you 40 to 50 or 45 seconds to read what you are going to listen or what you are going to hear in the next 4 or 5 minutes. So these kind of things, they will just give you an instruction over there. So before that was you would have 30 to 40 minutes, and you need to just pay your totally attention towards the questions and need to understand the questions. आपको पूरी तरह से अपने जो माइंड है आपका उसको आपने कॉन्सेंट्रेटली बढ़िया तरीके से उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जो आप आगे 30 to 40 सेकंड के बाद सुनने जाओगे। तो यहाँ पे पहले आपको जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आपको ये चीज और ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। तो कई बार जैसे यहाँ पे हाउ मैनी है, वहां पे 4 है, हाउ मैनी तो वो तो है पिकनिक, द पिकनिक 4, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। सो लेट मी टेल यू हाउ मैनी पीपल्स आर सिंडी एंड बॉब प्लानिंग द पिकनिक फॉर। ठीक है, पिकनिक के लिए कितने लोगों का वो एडजस्टमेंट करेंगे या प्लानिंग कर रहे हैं, कितने लोगों का, हाउ मैनी पीपल्स। सो दे आर टॉकिंग अबाउट द हाउ मैनी पीपल्स। अब यहाँ पे ठीक है आपको हाउ मैनी लगे, कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पर व्हाट होता है, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने दे दिया व्हाट और लास्ट में दे दिया यहाँ पे अबाउट, तो इसका मतलब हुआ किसके बारे में। क्या मतलब इसका, किसके बारे में। बच्चे देते हैं व्हाट मींस क्या, तो आप इसमें मोस्टली कंफ्यूज रहते हो। व्हाट लास्ट में अबाउट लगाओ तो इसका मतलब क्या हुआ, किसके बारे में। जैसे व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, इसका मतलब क्या हुआ, वो किसके बारे में बात करेगा। वो किसके बारे में बात कर रहे थे, तो आप वहां पे नीचे ऑप्शन लिखते हो। नेक्स्ट में कई बार आपको ऐसे ही मिलता है व्हाट और लास्ट में लगा होगा 4, तो इसका मतलब होता है किसके बारे में, और इसका मतलब होता है किसी पर्सन की या पर्टिकुलर थिंग के बारे में। इसमें व्हाट फॉर इसका मतलब होता है किस लिए, किस काम के लिए, किस पर्पस के लिए, तो वो व्हाट फॉर। नेक्स्ट व्हाट लाइक, अगर ये चीज आ जाए व्हाट लाइक, इसका मतलब ये स्पीकिंग में कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, तो वहां पे बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। तो व्हाट इज योर न्यू सेल फोन लाइक, तो या व्हाट इज योर न्यू टीचर लाइक, आपका नया टीचर किस तरह है। व्हाट लाइक मतलब किस तरह है, तो आप बोलते हो माय टीचर लाइक, आप उसकी लाइक वाली लाइकिंग मतलब वो वांट करता है या प्रेफर करता है वो बताना स्टार्ट कर देते हो। तो आप इस तरह से नहीं आप यूज कर सकते, तो प्लीज आप इसको ध्यान से सुनना। व्हाट अबाउट इज किसके बारे में, किस थिंग के बारे में, और व्हाट फॉर इट मींस किस लिए या किस पर्पस के लिए, कोई रीजन है, और व्हाट लाइक मतलब किस तरह। ओके, किस तरह मींस हाउ, इसका मतलब हाउ किस तरह। तो आपको ये ध्यान से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बाकी और आएंगे तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे आते रहेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। सो लेट्स On which date, यहाँ पे सिर्फ पूछ लिया on which date, I mean आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे तो how many हुआ peoples, how many peoples मतलब यहाँ पे counting people की बतानी है जो पिकनिक के लिए सिंडी एंड बॉब प्लानिंग कर रहे हैं। on which date या when, ओके या एग्जैक्ट डेट जो भी पूछेंगे। will the picnic be held, ओके will और be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अभी अपकमिंग के अंदर मैं आपको ये फैमिली चार्ट बना के दूंगा, जो आपको वर्ब्स में प्रॉब्लम आती है आप उसको अवॉइड कर सकते हो। फैमिली चार्ट की किसके साथ बी आएगा, किसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी, कैसे आएगा, तो इस आप आगे इसको अंडरस्टैंड करोगे। तो व्हाट हमने को यहाँ पे क्या राइट करना पड़ेगा, ऑन व्हिच डेट, ओके किस डेट पे कोई डेट लिखनी पड़ेगी। व्हाट इज द टोटल बजट फॉर फूड एंड ड्रिंक पर पर्सन, टोटल बजट पर पर्सन, और किस किस का, सिर्फ फूड एंड ड्रिंक का। तो आपको यहाँ पे पाउंड का निशान दिया हुआ है तो बता देंगे। Which food does Bob
टेक्स्टिकली से इज अनसूटेबल। मतलब बॉब किसी ऐसे फूड के बारे में बात करेगा, बॉब किसी फूड को बताएगा जो कि वहां के कंडीशन या वहां के लोगों के लिए या किसी भी कंडीशन में वो वहां पे सूटेबल नहीं है। मींस वो उसको कहेगा इसको लीव कर दो या इसको छोड़ दो, इसको रहने दो, तो वो इस तरह की बात करेगा। सो अपने को ये चीज अंडरस्टैंड करनी है और प्लस प्लीज साथ साथ चलना है। आप जब भी वहां बैठे होंगे अपने टेस्ट के अंदर या यहाँ पे भी, तो आपको कहीं भी साइड में अपने कंसंट्रेशन को ब्रेक नहीं करना है प्लीज। ओके, आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना है और आसपास कुछ भी नहीं देखना। कई बार ऐसा होता है कि जब वो थोड़ा स्लो हो जाता है या रुक जाता है बीच में, तो आप इधर उधर देखने लगे हो। आपको पहले 1 to 40 तक तो इधर उधर कहीं भी आपको नहीं देखना, टू और कुछ भी नहीं देखना आपको। तो हाउ मेनी पीपल आर तो अपने कितने 1 2 3 and 4 वी आर गोइंग टू हियर 4 क्वेश्चंस। तो हम 4 क्वेश्चंस लिसन करने जा रहे हैं, आपको ध्यान से बढ़िया तरीके से इनका आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। To answer questions on what you hear, there will be time for you to read the instructions and questions, and you have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to your answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a conversation between Cindy and Bob. First, you have some time to look at questions 1 to 10. Now listen carefully and answer questions 1 to 10. So, Bob, how many people have said that they're coming on the company picnic? Well, Cindy, we've got 35 definites and another 10 probable. Shall we say 50? I think so. And we've fixed the date for... Okay, so they have just said that the total number of people is the total number of people is 50. They can expect, means they said that 35 and 10 more, and then like overall how many people, overall the peoples they're planning, like they're planning, not still they have got the people, they're planning that there would be how many people? There would be 50 people. So that's good, and always keep in mind that how many words you need to write down, even or add a number. So listen, next one. The 26th, the last Sunday in August. Great. I hope the weather's good. Should be. Now, we... Okay, what date? 26th August. 26th August is the date. We have to decide where to order the food from and what kind of things we want. Right. What's our budget? We've decided to go for £10 a head for food and £5 a head for drinks. Okay, I got some pamphlets from caterers. What do you think? The most important thing is to make sure that there's a variety of food. Okay, so total budget कितना उसने 10 and 5 is the 15. 10 and 5 is the 15. Okay, that's good. That's good. We don't want people complaining that they don't like anything. We also don't want food that could deteriorate in the sun. Ice cream, that kind of thing. You've seen these pamphlets. What do you think? Well, I thought Paris Kitchen looked good. The price almost exactly meets our budget. And they seem... Okay, what they're talking about? Unsuitable क्या है? What is unsuitable? Unsuitable क्या है उनके लिए? Ice cream. Ice cream is the unsuitable. So, okay, let's move further. But उससे पहले that, let me tell you what is there. Okay, no more than 2 words. Always keep in mind. Or a number or and a number. मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर 2 वर्ड्स एंड अ नंबर, तो ये 3 हो गए, तो देख सकते हो आप एंड लिखा हुआ है एंड अ नंबर, तो 3 वर्ड्स भी आ सकते हैं। आई मीन 2 वर्ड्स और एक नंबर 3 हो जाएंगे, और अ नंबर के बाद या नंबर आ सकता है। तो क्या लिखा? पेरिस किचन। ओके, पेरिस किचन लैक ऑफ द वैरायटी ऑफ फूड, वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड अवेलेबल नहीं है, और पुअर क्वालिटी। तो पुअर क्वालिटी किसकी? तो वो यहाँ पे जिस किसी के बारे में बात करेंगे, वी नीड टू लिसन केयरफुली एंड देन वी विल write it. Company caters expensive, company caters expensive and discount for group of
30 और more, तो कितने परसेंट या कुछ ऐसा अकाउंट वहाँ पे सॉरी डिस्काउंट बताएंगे कि आप कितने परसेंट है डिस्काउंट फॉर ग्रुप ऑफ द 30 और मोर एंड इवन दे विल टॉक अबाउट सेलिब्रेशंस क्या क्या है वहाँ पे सेलिब्रेशन में न्यू कंपनी ओनली डैश 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 फॉर पिकनिक्स एंड डैश 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 डिशेज आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कितनी डिशेज या कौन सी डिशेज बताएंगे ऑफर्स फ्री सैंपल्स है तो इवन से डिशेज ऑफर फ्री सैंपल से ये भी बात की जाएगी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में बिल्कुल ध्यान से सुनना है केयरफुली और वेट सेव आ गया जो अभी ऊपर किया था हमने व्हेन विल बॉब एंड गेट गो टू यहाँ पे व्हेन मींस गो टू द सेलिब्रेशन किस कब जाएंगे तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा टाइम जो कि आप सुनोगे व्हाट इज सेलिब्रेशंस टेलीफोन नंबर तो टेलीफोन नंबर उसका क्या है वी विल लिसन एंड देन वी विल राइट इट सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज देयर Paris. You've seen these pamphlets. What do you think? Well, I thought Paris Kitchen looked good. The price almost exactly meets our budget, and they seem to have a good variety. I don't know. A friend of mine used them for her company and wasn't impressed. Really? What exactly didn't she like? Well, the food. She said the food was good, but not quite the variety they'd expected. The drinks included some wine, which was apparently not very good. Okay, तो पहले मैंने इसके बारे में बताया था उसके बाद में उसने ड्रिंक्स स्पेशली वाइन दैट वाज नॉट वेरी गुड तो पुअर क्वालिटी किसकी वहां पे बताई गई है वाइन किसकी वाइन सो वी विल राइट हियर नाउ वाइन ओके Company caterers. Looks a bit pricey. Pricey is we're talking about the like it's a costly, it's a pricey, and even it's expensive. So talking about the company caterer that is expensive and the costly, they'll talk about that what percent of the discount they will provide for the people of 30 or more than 30. Mind you, I've heard that they are very good. Let me check the price. Yes, £12 a head for food. That's more than our budget. Do you think we could get a discount? Yeah, because we talked about the discount, and sometimes they can say they can be the off, 50% off, 60% off. We're talking about discount or sometimes we can talk about the concession. What concession? What percentage of concession is pointing to us? So we need to listen carefully. That we know that we are already pre-planned that they would change the words, vocabulary, even sentence structure. They would change, but we need to listen carefully on those what they are saying, what they talk about. See if it says anything in the pamphlet. Yes, they do offer a discount for groups of more than 30. 10%. Okay, how many percent? It's how like it's 10% only, so you can write down the 10% discount for, and you can like 30 people, so it's about the 30 I think. So group of 30, not age, talk about the group of, right? Group of. Now the celebrations at the new company and what only dash for the picnic, what only is there? Does that help us? 10% off £12. It's still more than we budgeted for. Hey, look at this one. Celebrations. It's a new company. I asked a few people about them, but no one has any ideas. Well, let's see. £9 a head for food and £5 a head for drinks. That's fine. What kind of food do they have? It says here that they just provide cold meals for picnics. Okay, what meals? It's a called meals. Okay, called meals just for the picnics, just for the picnic because we need to write down for the picnic what is there. Only dash for the picnic. They can speak anything over there. So, like they can give them like there's extra food for the picnics, like there's something extra for the picnics because we don't know what they're talking about. They're talking about the food, or we don't know about that one. So we need to listen carefully. What is the for the picnics? So they have that cold food, cold meals for the picnics. Now dishes. What kind of dishes? Big dishes, small dishes, free dishes. What dishes? And even like what kind of dishes? They can talk about anything like apart from what I'm saying. They can say anything. We listen carefully. What dishes? So just be ready.
like around the dishes. What they will speak around the dishes. When they will use the word dishes, you need to listen the pre-words and even the after, like this was. Well, that's okay. And they include vegetarian dishes. Okay, what dishes? Vegetarian dishes. Okay, vegetarian dishes. You can listen carefully. So that's the ones. They will after that they will talk about when will Bob and Cindy go to celebration. Okay, so like the persons when they will go to. So the word, how many words are there? One word or a telephone number. They will say the telephone number is over here, and the one word is over here. When well. So write down what will be there. We do have some vegetarians to take into consideration. Take into consideration, although which is like please write down. Take into consideration means हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए या इस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए हमें इसको अपने माइंड में रखना चाहिए. Take into consideration. Take into account में होता है, okay? Take into account. Well, it looks good to me. The only problem is their lack of experience. I mean, it's a bit of a risk, isn't it? Yes, if the food's no good, we'll look incompetent. Ah, look here. It says that we can visit their premises and try some of the dishes they offer. You mean we might get a free lunch? Shall we call them and arrange to go and see them? Okay, which day? How about tomorrow? No, we've got that meeting. The day after tomorrow, Thursday. Okay. What there? Yeah, they have the free sample. They're talking about that, like there's some kind of free samples, and even now they're talking about what day they are tomorrow, day after tomorrow, whatever they've said. That the day is we have just heard what we have heard. The day is a Thursday. What a morning! If they have spoken the morning, but we can't listen. Sorry, we can't write down that words because we need to write down over there one word. So when we talking about the day, talking about the day. So it's a Thursday. Good. Time? 11? Good. Right. What's their phone number? 28653479. We also need to ask them whether they can deliver straight to the picnic site, don't we? Okay. So they have spoken the contact numbers. You need to listen. You need to hear it carefully. And if they want to make any kind of amendments over there, like they will say, "Oh, sorry, not a 5, it's a 6, not a 6, it's a 5." So you need to listen carefully, and after that you can write down. So that's all about these kind of questions. Okay, so thank you very much for giving your valuable time. I will see you, I will meet you with a new video. So till then, take care and bye bye.